1.25 তাহলে 1.25 ରୁ 2.5 তাহলে more than 2.5 আচ্ছা সে যে আরএসি হল তারপরে বড় 0.33 0.67 ରୁ 1 তারপরে more than 1.25 তারপরে নেক্সট আর সেমিটল রেট 167 তারপরে 167 ରୁ 1.33 ରୁ 2 তারপরে 2 ରୁ 2.5 আর more than 2.5 এরপর লাস্ট ক্লাস जो more than 3.75 সেম চালিয়ে দিতে 1 2 2 3 3 ରୁ 3.75 সরি হলো তাহলে লাইট সয়েল হেভি সয়েল এটা হলো বেসড অন প্ল্যান্ট লাইট সয়েল হেভি সয়েল ଥିଲା কোন ଥିଲା 0.05 ରୁ 0.5 ରୁ 2 more than 2 এটা আছে 1.5 আর 3 ରୁ 5 more than 2 সরি হলো okay so based on irrigation so first one is the sprinkler irrigation कौन पढ़ेगा sprinkler irrigation बुझेगा sprinkler irrigation is also called as overhead irrigation also known as overhead irrigation बुझेगा first लिखिए what are the advantages बुझेगा तापर नेक्स्ट कौन लिखिए disadvantages okay तापर लिखिए कौन types of sprinkler system से types से लिखिए two types based on nozzle another is based on portability कौन लिखा तब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा distribution pattern ओके तब कौन लिखा schematic diagram ये है सोलर स्प्रिंकलर सिस्टम सॉरी और जो मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम बा ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम वर्ड मन रखियो कौन आगे लिखियो कोठी एटा यूज हो एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रूव लिख देबा कोठी एटा यूज हो होला where it is used okay code use of first one is sandy soil okay because in sandy soil the infiltration rate is high okay so it requires frequent irrigation sandy soil the infiltration rate is high like for infiltration rate is high so it requires frequent irrigation yes or no okay तब नेक्स्ट कौन लिखिबा जिबा लास्ट सुदा तब आसो सेलो सॉइल कौन लिखिबा सेलो सॉइल कौन प्रॉब्लम हो in case of shallow soil what does it mean shallow soil means water low condition will be there if we will go for surface method of irrigation in case of shallow soil then water low condition will be there hence without going for surface method of irrigation we should go for sprinkler method of irrigation shallow soil वाला ताको कौन पढ़ेगा क्वेश्चन से undulating topography means undulating topography means it is
whether it is evenly sloped or unevenly sloped. Unevenly sloped. Koda? Uneven slope is there. Okay. So if in case of surface method of irrigation, we should go for land leveling. Okay. But if the cost of land leveling is very much high, then we should go for sprinkler method of irrigation. That means we can say in hilly areas it is very much difficult to go for land leveling. Undulating topography means directly go to hilly regions. Okay. So in this case we should go for sprinkler method of irrigation. Next one is sandy soil, shallow soil, undulating topography. आपण आसो का बरे क्रॉप एडा गला सॉइल बेस्ड ताबले क्या क्रॉप बेस्ड क्रॉप द क्रॉप व्हिच रिक्वायर कौन करियो से फ्रीक्वेंट इरिगेशन क्रॉप व्हिच रिक्वायर फ्रीक्वेंट इरिगेशंस ओके सो ए चारटा केस रे हमें कौन करियो स्प्रिंकलर मेथड को यूज कर परियो बुझिए गला ना this sprinkler method of irrigation can be used as अच्छा ये जो sprinkler method का हम कौन करेंगे it can be used as main source of irrigation yes or no आपको मेरा crop रे इटा main source of irrigation लगे आप किसी irrigation दबाने केवल हम sprinkler दे पाएगा otherwise we can go for supplemental irrigation supplemental irrigation starting regular crop season grow करछे तो initial condition of the crop season water is there availability of water is high but due to some situations during the mid season of the crop now water scarcity will be there so in that case without going for surface method of irrigation we have to go for supplemental irrigation by the sprinkler method बुझी गला initial condition रे water is there so we can go for surface method of irrigation but कौन हला वर्षा वर्षा हला drought situation हो गला so in that case as there is water scarcity is there so we should go for supplementary irrigation by means of sprinkler बुझी गला third one we can go for protection irrigation but protective irrigation कौन protective irrigation if in cold region the chance is frost damage is there कौन cold जो है ठंडा एरिया रे कौन हो और frost damage will be there so in that case we should go for sprinkler irrigation okay so एक केस में this sprinkler irrigation can be used for three purpose either it can be used only from planting season to end of the season this is as a main source of irrigation okay during the mid season period if the water scarcity will be there we can go for supplemental irrigation then we can go for protective irrigation अद्धा recording है okay सभी कर दिए अब कोडी आसे हमें एडवांटेज ओके अच्छा एटा मन रखता हो 1946 रे इवॉल्व होला केबे इवॉल्व होला 1946 रे स्प्रिंकलर मेथड इवॉल्व होला ओके सो व्हाट आर द एडवांटेजेस फर्स्ट जब हम लिखियो एग्जाम रे फर्स्ट हम कोन करे डाटाबेस लिखबा जति हम डाटा को मन रखुचे सेडा को पुट कर दो जे एग्जाम में देखियो से देखियो फर्स्ट एडवांटेज से डाटा भर्ती कर दीजिए चलो बुझी गला यदि हम डाटा वाला जहां डाटा बेस्ड राइटिंग पार्ट अछि तो मझे रखिया बा लास्ट को रखिया मेंस ता इग्नोर हे जो ओके नहीं तो स्टार्टिंग में हम भलो चीज दे दो फर्स्ट देखला काट दो बुझी गला सो फर्स्ट मन रखो कोन एडवांटेज हे परिबो को एफिशिएंसी इज वेरी गुड कोन वाटर यूज एफिशिएंसी बुझी गला so we have to compare with the surface method of irrigation so water use efficiency is high कितने high देखो 3 to 4 times high 3 to 4 times high in sandy soil
as compared to flooding. As compared to flooding. That means whatever the water efficiency in case of flooding method, already what scientists use kariyo. So if I will go flooding method of irrigation as compared to flooding method, the water use efficiency will be 3 to 4 times higher in case of sprinkler method of irrigation. Okay. Second, कौन लिखिबा? Saving of water. केते सेव हो स्प्रिंकलर रे? 25 to 50% of the water will be saved. बुझी गला? So एटा हम लिखि परिबा तार लॉस है जे को जगह का कंपेयर करिया हमें सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन. बुझी गला? एटा मन रखो 30 to 50% loss will be there if we are going for canal irrigation. कौन irrigation करबा? In case of canal irrigation, there will be 30 to 50% loss of water will be there. बुझिएगा? So as compared to surface method of irrigation, if we are going for sprinkler method of irrigation, then we can save the water from 25 to 50%. Okay. So now again, area. We can increase the area of irrigation. We can increase the area of okay. We can increase the area of irrigation. Can increase kariba? As we are saving the water, so how much water is saved? By this much of water, we can use the water for irrigation purpose in another area. So now. एठी जति हमें 25 to 50% वाटर सेव कर देले सेही वाटर को नहीं हमें आउट एरिया इरिगेशन में करबा. दैट मींस नाउ द एरिया ऑफ इरिगेशन विल बी इंक्रीज एज कंपेयर्ड टू सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके नहीं माने 100 लीटर रे जति हम सरफेस मेथड इरिगेशन करबा सेही 100 लीटर रे स्प्रिंकलर में अधिक एरिया इरिगेशन करबा. एते अधिक 1.2 जो देखो सॉरी एटा को 1.5 यार हाफ कर दियो हला 1.5 to 2 टाइम्स मन रहला केते एरिया ऑफ इरिगेशन इंक्रीज करबा 1.5 to 2 टाइम्स. ओके आ कोन परिबो आ कोन प्रोडक्ट हो डिस्चार्ज रेट तो कोन हो हां ताले कोन लिखबा it मन रखता हो discharge rate should be less than the infiltration rate. Okay नहीं? Discharge rate should be less than the infiltration rate in case of sprinkler method of irrigation. बुझिएला? काहे कि हमें जो वाटर लो कंडीशन पढ़िला वाटर लो कंडीशन कोन हितला केते वाटर लो कंडीशन होबो को जेतला मन हमें एक्सेस इरिगेशन दोजे ता माने कोन जेतले हम डिस्चार्ज रेट इज ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन रेट ता माने अधिक हमें प्रोवाइड करछे बट भितरु कम जाउछ हो कि नहीं. ए केस रे डिस्चार्ज रेट हमें दोचे इरिगेशन हम अधिक दोचे एज कंपेयर टू इनफिल्ट्रेशन हम भितरु को बसियो तले हमें जते अधिक दबु आ इरिगेशन इनफिल्ट्रेशन रेट कम थिबो इन दैट केस वाटर लो कंडीशन पे दे हो कि नहीं. then sprinkler ulta होता the discharge rate should be less than the infiltration rate. Okay, so here the discharge rate केते आसीबो normally जन हम कहबा discharge rate will be 0.05 to 0.06 to 5000